किसी व्यक्ति के निर्माण का स्वर्णिम समय यौवन काल होता है, जिसमें वह आने वाले लंबे जीवन के लिए शरीर, मन और आत्मा का निर्माण और विकास करता है। इसी नींव पर अपने जीवन का मजबूत भवन खड़ा करता है और उसका भोग करता है। किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला और ऊर्जा उसकी युवा शक्ति ही होती है। यही उसका आत्मबल और इच्छा शक्ति भी होती है। इसीलिए कहा गया है, वीर भोग्य वसुंधरा। राष्ट्र निर्माण के ताने बाने में यौवन के ही धागे होते हैं। अतः जो राष्ट्र अपनी इस ऊर्जा का संरक्षण और संवर्धन करता है, वह विकास के उच्च शिखर पर पहुंचता है। राष्ट्र के कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक, राजनीति रूपी चक्के को यही युवा शक्ति, ऊर्जा व गति प्रदान करती है। यह राष्ट्र की रगों में बहने वाला गर्म खून है, जो उसे चैतन्य और प्रगतिशील बनाता है। भौतिक व आध्यात्मिक दोनों के विकास में इसी ऊष्मा का तप सक्रिय रहता है। इतिहास साक्षी रहा है कि जब किसी राष्ट्र की धुरी लड़खड़ाई है, युवा शक्ति ने आगे आकर अपने पुरुषार्थ से उसे सुदृढ़ बनाया है। आज अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे नशा, फैशन परस्ती, पाश्चात्य जीवन शैली, आस्था संकट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी देश की युवा शक्ति पर आरूढ़ हैं। आज युवा शक्ति को आत्मबोध एवं अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित कराना समय की मांग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 35 वर्ष तक की उम्र की 65% आबादी है। यह युवा शक्ति जिधर चल पड़ेगी, देश भी उधर ही चल पड़ेगा। अतः देश का भविष्य अब युवाओं के हाथ में है। यह युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति बनकर राष्ट्र को समृद्धि, उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने युवा की अद्भुत परिभाषा दी है। युवा वो है असंभव जिसके शब्दकोश में नहीं, जो बाधाओं को चीर कर अपना मार्ग बनाता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता एवं स्वामी है, जो भाग्य नहीं, अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो उमंग, उत्साह, जोश से जीता व सुनहरे भविष्य के सपने देखता है, जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। असमंजस व अवसाद की स्थिति से गुजर रही युवा पीढ़ी को दिशा देने का काम एक चिंतक ही कर सकता है। नमस्कार। वर्ष 2006 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, मिले और इन दोनों चिंतकों ने मंथन किया कि युवा पीढ़ी को एक सृजनात्मक मंच देने की आवश्यकता है जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। यहीं से दिया की नींव रखी गई। I am indeed delighted to participate in the second convocation of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am very happy that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. We have the responsibility of transforming India into a developed nation before the year 2020. It is an endless journey through knowledge and enlightenment. Such a journey opens up new vistas of development or humanism, where there is no scope nor room for pettiness, disharmony, jealousy and hatred or enmity. It transforms a human being into a wholesome whole, a noble soul and an asset to the universe. God bless you. जिस तरह एक दिया अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है, दिया भी इस देश के युवा मन से अंधेरे को दूर करने का स्वप्न लेकर चला है। ये प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर, विनम्र, संवेदनशील दिव्य युवाओं को तैयार करने के लिए प्रयासरत है, जिससे राष्ट्र निर्माण की रचनात्मक गतिविधियां चलाई जा सकें, दिव्य भारत का पुनर्निर्माण हो। इसका लक्ष्य युवाओं की क्षमताओं का विकास कर दिव्य भारत का निर्माण करना है, जिसमें व्यक्ति, परिवार व समाज का उत्थान हो। दिया युवाओं के सपनों में आदर्शवाद लाकर उनकी वैचारिक प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक अध्यात्म के माध्यम से युवाओं में देवत्व की अभिव्यक्ति, दुनिया में सद्भाव के साथ सतयुग की वापसी इसका परम उद्देश्य है। इस तथ्य की महत्वता समझते हुए वो डॉक्टर कलाम के भारतवर्ष को
वर्ष 2020 तक एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के स्वप्न की ओर युवा शक्ति को अग्रसर करने के लिए दिया इस महान राष्ट्र के युवाओं के लिए एक आंदोलन है जो मजबूत सिद्धांतों और यथार्थवादी लक्ष्यों पर आधारित है। जो लोग दिल और दिमाग से युवा हैं एवं जो एक नए भारत की परिकल्पना के हमारे स्वप्न से सहमत हैं, उम्र, जाति या धर्म की परवाह किए बगैर हमसे जुड़े। मुझे विश्वास है गायत्री परिवार के दिया आंदोलन के माध्यम से देश के युवाओं में वो संवेदनाएं प्रकट होगी, सामाजिक जिम्मेवारियां प्रकट होगी, एक साहस की वृत्ति पैदा होगी, कुछ करने के लिए, कुछ कर करके दिखाने के लिए जीवन को लगाने की इच्छा होगी। देश के लिए जीना सीखो इस मंत्र के साथ। इस आंदोलन से जुड़कर आपके जीवन में खुशी एवं एक नए उत्साह का संचार होगा। साथ ही अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। नमस्कार, प्रणाम सभी को। दिया मुंबई के आज के इस अति विशेष संस्करण में आप सभी का स्वागत है। दिया मुंबई वेलकम्स यू ऑल ऑन दिस वेरी स्पेशल occasion of the 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हम बस कुछ ही क्षणों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ट्रिब्यूट है। बहुत ही क्षमा चाहेंगे, बहुत ही भावुक कर देने वाला ये एक्सपीरियंस था। वन इंडिविजुअल मे डाई फॉर एन आइडिया बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इन 1000। ऐसा कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिनकी 125वीं वर्षगांठ हम आज मना रहे हैं। जितना कहा जाए भारत के इस सपूत के बारे में वो कम है। नेताजी की जर्नी से हम सब वाकिफ हैं। वी ऑल आर अवेयर कि कैसी उनकी जर्नी रही और किस तरह से आज़ादी के आंदोलन में वो जुड़े और अंग्रेज़ों ने उनको नज़रबंद करने की काफ़ी कोशिश करी, बट ही एस्केप्ड टू अफगानिस्तान एंड देन उन्होंने फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मोर्चा खोला। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम अपने जो हीरोज़ हैं उनको सही ड्यू नहीं दे पाते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। आज की हमारी जो मुहिम है, आज की जो एक कोशिश है, वो ऐसी ही एक कोशिश है जहाँ पे हम अपने राष्ट्र के इस महान हीरो को, और क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे वाकिफ हो पाएं कि कितना बड़ा योगदान उन्होंने हमारे देश की आज़ादी में दिया था और क्या आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सकती हैं, वही हमारा आज का विषय है, दी अनडाइंग लेगेसी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या कुछ नेताजी से सीखा जाए? और इस विषय पे, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही विशेष गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव गडगिल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री केजे सोमैया कॉलेज से। मेरी ड्यूटी है एज अ होस्ट कि मैं डॉक्टर साहब की जो प्रोफाइल है वो आपके सामने पढ़ूं और उन्हें इंट्रोड्यूस करूं। He completed his doctoral research in Factions and Factionalism in Indian National Congress from the University of Mumbai. Certificate program in FedEx 16, Democracy and Autocracy, Theories and Empirical Findings from the University of Naples, Federico to Italy. A recent article of his on Bose and Rani of Jhansi Regiment was published in an edited book published by Bloomsbury India in 2020. He was invited as a panelist by St. Xavier's College in a national conference organized on the
theme of cinema through the lens of history. And he was invited as a speaker at the Nagpur Literary Festival in February 2020. We are extremely fortunate to have you with us today, sir, on this very emotional and this very important topic. And I would now request you to take us through uh, the teachings of Netaji, his undying legacy, and what could the youth of today, because as we saw in the documentary, Diya is working towards bringing youth on a common platform where they can do activities that are constructive for nation building, where they can contribute to their nation. And in fact, the founder of All World Gayatri Parivar, Pandit Shriram Sharma Acharya ji, during his first chapter of life, he devoted his youth to the Indian freedom struggle, and he was in fact a very prominent figure in and around Agra when a fight was offered against the British. So the organization has a history of having served for the cause of the nation, and today we want the youth of the country to feel the same passion, to feel the same uh, sort of pain when we see our country in the shape it is today. And as we saw in that documentary, Dr. Kalam's vision of taking this country, where we can proudly say that we are a developed nation in all senses, something that the likes of Netaji saw. So, sir, with all respect, I welcome you to address us today. Thank you so much, Vijayji, for such an elaborate introduction of the great work that Diya Mumbai has been doing for so many years. At the outset, let me thank Diya Mumbai for extending this warm invitation to address, and on such an important occasion in the history of the Indian nation, on the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, undoubtedly one of the most important figures of the entire Indian freedom struggle. I thank Vijayji, Harshalji, Suchitaji for coordinating and organizing this event for today. Now, when we talk about Netaji Subhash Chandra Bose, the only image that comes perhaps in front of us is that he led the Indian National Army, and it was this army which did fight against the British for the cause of liberating our motherland in the northeastern theatre of the war in India. But was that all that Netaji had done is a big question that needs to come in front of us. कभी कभी ऐसा लगता है मानो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के योगदान के बारे में हमें उतनी गाथाएं नहीं बताई गई जितना शायद आवश्यक था. Perhaps there has been a grave injustice which has been done in the way history has been narrated through our educational curriculum, whether it has been in the school or later on even in the colleges and educational institutions of higher learning. It is good that in the recent years, as a result of efforts which have been taken by independent filmmakers, researchers, journalists, and also by the governments in the recent times, we have come across the contributions that have been there of numerous figures in the Indian freedom struggle whose contribution perhaps did not get the voice that it was supposed to get. Netaji was one of them. अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जितना कहे उतना कम है. ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वो कांग्रेस के साथ शुरुआती दौर से जुड़े हुए थे, और हम ये भी जानते हैं कि उनके बाद में चलकर कुछ मतभेद आए थे, मतभेद जो हम जानते हैं कि गांधी के साथ हुए थे. बट सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब हम बात करते हैं, इज इट ऑल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और समथिंग मोर? In today's session, what we shall be trying to do is trying to understand the legacy which is there, the legacy of Subhash Chandra Bose's philosophy and also of the Azad Hind Fauj that he had created. Now, with regards to the contributions which are there of Netaji Subhash Chandra Bose, the 1930s politics is something which is extremely important from the perspective of the making of the Indian nation, as well as along with that, also the idea which eventually comes to fructification
that is the creation of the Indian National Army. अब यहां पर हम देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये गांधी जी के साथ संघर्ष करते हैं विचारधारा पर, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि संघर्ष जो चलता है, it was also on the methodology which needs to be there, which needs to be adopted, which needs to be embraced. So when we are talking about this ideological struggle which took place between Gandhi and Subhash Chandra Bose, this was a rift which emerged on the basis of philosophy as well as of the methods which had to be embraced. सुभाष चंद्र बोस जो है, उनका गहरा मानना था कि शांतिपूर्वक तरीके से हमको आजादी मिलनी चाहिए, अहिंसा का मार्ग ये सही मार्ग भी होगा, but that is not the only path that will perhaps attain India her independence. So along with the path of non-violent struggle, there also needs to be a radical revolutionary path that needs to be taken up. Now it is over here that we see the conceptualization of an army of India's liberation comes about. Now what sets Netaji also apart from many of his contemporaries is that you have a series of ideologies which had all an influence on Subhash Chandra Bose, and you have a new philosophy, एक नई विचारधारा जो नेताजी की खुद की सोच से बाहर निकल कर आती है. यहां पर हमको नेशनलिज्म के बहुत सारे अंश दिखते हैं, patriotism, the love for one's own country, वो भी हमें दिखाई देता है. There were certain elements which were also inspired by dictatorial models, particularly the fascist ones. But more importantly, you also have the humanitarian aspects of Indian spiritualism and also the ideology of socialism. So इन सब को लेकर हम देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा जो है वो बनी हुई थी, और इसी विचारधारा के आधार पर भारत का सशस्त्र आंदोलन खड़ा होता है हमारी आजादी के लिए. अब जनरली कथा बताई जाती है कि you have the Indian independence that was won only through the non-violent means. Undoubtedly so, the non-violent movement under the leadership of Gandhiji had played a significant role in the liberation of the Indian nation. But along with it, a supplementary role that had been played, a role that perhaps is not talked about much, is the Indian armed struggle for independence. Bharat ka सशस्त्र आंदोलन आजादी के लिए. And it is over here, this independent struggle which was in the nature of an armed struggle, इसके बारे में हमें आज बात करनी है. हम जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत ही खतरनाक या डेंजरस या खौफ भरा सफर जो है वो लिया था, to travel from Calcutta all the way to Berlin. Now he knew that the only powers that will come to the cause of India and India's freedom were the powers that were opposed to the British. In fact, he wanted to take the help of the Soviet Union to start with. But जब वो कामयाब ना हो पाया, तो उन्होंने तय किया कि सपोर्ट जो है वो फैसिस्ट पावर्स से लिया जाएगा. और यहां पे हम देखते हैं कि फैसिस्ट पावर्स का सपोर्ट जो है वो विचारधारा के आधार पर उनका विश्वास फैसिज्म में है इसीलिए नहीं लिया जा रहा है. इट वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑफ एन एनिमीज एनिमी बीइंग अफ्रेड. ये एक प्रकार का आयरिश डिक्टम था जो हम बहुत बार भारतीय आजादी संग्राम में देखते हैं कि दुश्मन का दुश्मन ये हमारा दोस्त होगा. सो इट इज ऑन दैट डिक्टम दैट यू हैव द सपोर्ट व्हिच वाज टेकन फ्रॉम द फैसिस्ट पावर्स. Now it is with the support of Germany under the leadership which was there of Adolf Hitler at that time, that you have the creation of the first liberation army, so as to say. बहुत बार हमें लगता है कि आजाद हिंद फौज जिसकी स्थापना हम देखते हैं जापान की मदद से दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी, ये पहली आर्मी थी लिबरेशन के लिए क्रिएट की गई एग्जाइल में, पर ऐसे नहीं है. इससे पहले भी कोशिशें की गई थी. In fact, Subhash Chandra Bose, before he becomes associated with the Indian National Army in the Southeast Asian part of the Asian subcontinent, we see Netaji Subhash Chandra Bose, with the support of Nazi Germany,
had raised an Indian army for liberation called as the Free India Legion. अब ये फ्री इंडिया लीजियन जो है, ये हम देखते हैं इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की मदद से बना था. Now, this Free India Legion had been established in 1942 and it continued to serve. However, later on, the role became controversial considering that you have Nazi Germany utilizing the Free India Legion without the adequate permissions. A Free India Legion was a prisoner of war army. Now, there were many Indians who had served in both the world wars. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हम जानते हैं कि लाखों भारतीय फौजी जो है वो अलग अलग फ्रंट्स पर जाकर लड़े थे और दूसरे विश्व युद्ध में भी सिमिलर सिचुएशन थी. Now what we see is that you have the Free India Legion that is established for the cause of liberating India, and the route that they were to take was through the Soviet Union, passing through the Central Asian region and then coming to India. So that is how the path of this Free India Legion was to be. But ye sare plans jo hai, they were thrown out of the way in a way because of the invasion of the Soviet Union done under Adolf Hitler. Now, with the invasion of the Soviet Union, Subhash Chandra Bose believed that this path would not be correct, considering that he believed that the Nazi Germans had committed a blunder by invading the Soviet Union. It is from this time that he wanted to move towards Southeast Asia, perhaps from where he would be closer home, from where he could lead this struggle for independence. The Free India Legion was not disbanded entirely. But you do have the fateful journey which Netaji Subhash Chandra Bose takes now from Germany, crossing the Atlantic and the Indian Oceans to come to Southeast Asia to take over the leadership of the Indian National Army. अब बहुत बार जब हम आजाद हिंद फौज की बात करते हैं तो आजाद हिंद फौज के बारे में बात करते हुए हम ये देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही नाम लिया जाता है एज द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द आईएनए, बट इट इज नॉट सो. Indian National Army was already established before the coming of Subhash Chandra Bose. कैप्टन मोहन सिंह और कैप्टन मोहन सिंह के साथ साथ उसी के साथ साथ हम देखते हैं यू हैव राज बिहारी बोस, जिनकी एक अहम भूमिका थी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी. So it is this army whose leadership was eventually taken over by Netaji Subhash Chandra Bose. There were some differences which emerged between the Japanese and Captain Mohan Singh, as a result of which you have it being in the temporary state of disbandment till Raj Bihari Bose was leading it. Raj Bihari Bose के दरख्वास्त पर जापानीज हुकूमत ने जर्मनी पर दबाव डाला और सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया कि वो आए और इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व जो है वो स्वीकारे. And that is how we see Netaji arrives in Singapore and takes over the leadership of the Indian National Army. Now, it is not only the Indian National Army that was taken over. Now, what is unique, what is important to be considered from the role of Subhash Chandra Bose and the Indian National Army, that he knew that there will be a requirement for the establishment of a provisional government of free India as well. So, the most important contribution of Subhash Chandra Bose is not only to lead this army, but also, interestingly, to have a provisional government in place. अब जब भी हम नेताओं की बात करते हैं, there are a few quotations, there are a few speeches which are considered as very important in nature. करो या मरो का नारा गांधी जी का 1942 के अगस्त क्रांति से जिस प्रकार से एसोसिएटेड है, उसी प्रकार से द क्लैरियन कॉल दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस had given in the jungles of Burma to recruit
The Indian people staying in Southeast Asia to the Indian National Army is one of the most remembered speeches and one of the most remembered quotations which are there from the Indian freedom struggle. यहां पर बात मैं ऑब्वियसली कर रहा हूं उस स्लोगन की जो था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. Now this became the clarion call, to the extent that you have literature also playing a role in popularizing this slogan amongst the youngsters. अब स्कूल में इतिहास के ऊपर अनेक चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. इट इज नॉट ओनली टू लर्न द हिस्ट्री ऑफ आवर सिविलाइजेशन, ऑफ आवर कल्चर, टू लर्न perhaps from the mistakes which had been committed in the past, but also to get inspired from the past to work for the present and the future. Now, one of the inspirational poetries that I remember particularly reading in school, which brought me closer to Netaji Subhash Chandra Bose and his philosophy, was this wonderful poem called as Khuni Hastakshar, which was based on the slogan of Netaji Subhash Chandra Bose. वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं पानी है. Now you have the Indians staying in large numbers in Southeast Asia. अब ब्रिटिश हुकूमत ये सिर्फ भारतीय भूखंड पर ही नहीं थी, तो उसी के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के भी अन्य इलाकों पर थी. वहां पे प्लांटेशन इंडस्ट्रीज जो अंग्रेजों की थी, वहां पर उन्होंने एज अ चीप लेबर इंडियंस को लेकर गए थे. So you have a lot of Indian emigre classes which were staying in Southeast Asia when the Indian National Army was being reorganized under the leadership of Netaji Subhash Chandra Bose. Now the important element which is there is ये आर्मी जो निर्माण की जाती है नेताजी के अंडर, ये सिर्फ प्रिजनर्स ऑफ वॉर या जो फॉर्मर इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जो जापानीज के पास थे, उन्हीं के साथ नहीं, तो उसी के साथ साथ जो वहां पे इंडियन सिविलियंस थे जो भारत के स्वातंत्र संग्राम में अपना योगदान देना चाहते थे, उन्हें भी इस आर्मी में इन्वॉल्व किया जाता है. You have a lot of civilians as well who underwent harsh military training in order to become a part of this armed struggle for India's independence. And that is how you have a more than 40,000 strong Indian National Army that was created. अब इंडियन नेशनल आर्मी या जिसको आजाद हिंद फौज के नाम से संबोधित किया गया नेताजी के काल में, अब इसकी एग्जैक्ट संख्या कितनी थी या इसका संख्या बल कितना था, इस पर अनेक इतिहासकारों की अनेक कल्पनाएं हैं. So from a very conservative number which is there from around 20 to 25,000 to a more liberal number which goes anywhere from 60,000 to 80,000 has been talked about as the total strength of the Indian National Army. But what has been considered to be perhaps a more pragmatic, more realistic number is close to 45,000. कि तकरीबन 45-50 हजार के आसपास आजाद हिंद फौज की टोटल स्ट्रेंथ हुआ करती थी. इंडियन नेशनल आर्मी का क्रिटिसिज्म भी हुआ है ये कहते हुए कि दिस वाज नथिंग बट अ पेपर टाइगर व्हिच वाज देयर, कि इसका संख्या बल सिर्फ कागज पर मजबूत लगता था बट दे डिड नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एनीवेयर ऑन द बैटलफील्ड. However, I find it ironical considering that the Indian National Army played a phenomenal role which was there in the northeastern part of the Indian subcontinent. जहां पे हम देखते हैं कि मणिपुर में, नागालैंड में बहुत महत्वपूर्ण युद्धों में इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों ने हिस्सा लिया था. The Battle of Imphal, the Battle of Kohima, the entire Burmese campaign has been one of the most courageous parts of the Second World War, which is often not narrated. Indian National Army शायद एक secondary role play कर रही हो along with the Japanese army, क्योंकि Japanese army की संख्या ये बहुत ज्यादा बड़ी थी in comparison to the INA. Japan was also the senior partner, let us say that. But to say that the Indian National Army was just a paper tiger would be doing grave injustice
to the role of the soldiers, to the role of officers, as well as everyone that was associated with the National Army. You do have great strategic inputs that were also given by many of the officers of the Indian National Army, which went unheeded at the Japanese military headquarters. One of the reasons which is advocated for the eventual defeat of the Indian National Army in the fateful battles of Imphal and Kohima in 1944 and 1945. अब इंडियन नेशनल आर्मी जो ये रेज की गई थी, ये एक यूनिक आर्मी थी in the sense that it was not an army, not only an army created in exile for the cause of India's independence, but यहां पर हम देखते हैं एक रिमार्केबल यूनिटी भी नजर आती है. शुरुआत में जो गाना दिया फाउंडेशन ने चलाया, इट वाज टॉकिंग अबाउट कदम कदम बढ़ाए जा. अब इसको कौमी गीत कहा जाता था क्योंकि ये कौमी एकता, सांप्रदायिक एकता की बात करता है. आजाद हिंद फौज इन्हीं आदर्शों पर हम देखते हैं कि बनी हुई थी. It was not only creating communal unity, it was not only trying to create unity across the Indian nation, irrespective of your religion or language or region. But interestingly, what we also see is that it played a great role in the gender empowerment too. ये कथा तो सभी ने सुनी हुई है कि आजाद हिंद फौज का एक बुनियादी हिस्सा जो हुआ करता था, that was the Rani of Jhansi Regiment. अब रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट जो है, इट वॉज गिवन फुल कॉम्बैट ट्रेनिंग. इट वॉज लेड बाय वुमेन ऑफिसर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, later on more known as Captain Lakshmi Sehgal. It was an all-women regiment, fully combat trained, which was also dispatched to the jungles of Burma, but did not see active combat. It was inspired by the great Rani of Jhansi, Rani Lakshmi Bai, जो हम देखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ उठी थी. Interestingly, as we see, it was Lakshmi, Captain Lakshmi itself, who led this fiery squad of Rani of Jhansi regiment. अब इसमें जो रानियां थी वो अलग अलग कारणों से इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जुड़ी हुई थी. So there were women who joined the Jhansi regiment for the genuine cause that they wanted to be a part of this historic struggle which was to liberate the Indian motherland from the shackles of British colonialism. Along with it, there were other women who also joined it, considering that they had been exploited a lot by the British plantation owners and they wanted to exact revenge at a personal level as well, along with the lofty ideal of liberating India. And you have the Rani of Jhansi regiment which comes about. Now, one thing that needs to be remembered is that Japanese administration ने इसका विरोध किया था और बहुत ज्यादा दबाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर डाला था कि वो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को नहीं बनाए. जापान हम आज भी जानते हैं कि पुरुष प्रधान संस्कृति ज्यादा है. Patriarchal systems, patriarchal societies, patriarchal norms were extremely strong in 1940s India and the Indian mentality as well as in the Indian culture. In the 21st century as well, we can see the same thing. So in such a time, when patriarchal structures are so strong and so gripping, having a combat-ready, women-only regiment was itself a revolutionary idea, a social revolution that was brewing under the Azad Hind Fauj, under the leadership and guidance of Netaji Subhash Chandra Bose. शायद ये उनका सबसे बड़ा योगदान था. आजादी के बाद भी हम जानते हैं कि तकरीबन 70 सालों के पश्चात महिलाओं को परमानेंट कमीशन भारतीय फौजों में मिला है, एंड दैट वाज ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरफियरेंस. We have seen the women struggling to get an entry into the combat roles of the Indian armed forces even after independence. And here we have, in the 1940s, in the jungles of Burma, the Rani of Jhansi regiment, bravely fighting, standing shoulder to shoulder with their men comrades for the same lofty ideal of liberating India from British colonialism. So सुभाष चंद्र बोस की एक अहम भूमिका 1940s के एक डिवाइडेड एटमॉस्फेयर में इस एकता को जागृत करना था कि जहां पे हम कौमी और
सामाजिक एकता भी निर्माण कर सकते हैं। उसी के साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू हैव जेंडर एम्पावरमेंट। सो उस नजरिए से भी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को देखा जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, नेताजी वॉज अ विजनरी। So he not only created the Indian National Army, but he also created the Provisional Government of Free India, जिसका नाम औपचारिक या ऑफिशियल नाम जो है अर्जी हुकूमत आजाद हिंद था, द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है ये सिंगापुर में स्थापित हुई थी 21 अक्टूबर 1943 को। नेताजी इसके प्रमुख थे और एक मंत्रिमंडल गठित किया गया था जिसमें हम देखते हैं, जैसे हमने कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन की बात की, वो भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा थी। Now this provisional government came forward with the rules governing not only the Indian National Army but also the Indians who were settled in the Southeast Asian regions. It was a fully functioning government with territories that were also granted to it. अब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम जानते हैं कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन के लिए, जिसमें एक होता है कि बाकी की सरकार या बाकी के देश जो है आपकी सरकार को मान्यता दे, उसको स्वीकार करें। So you have numerous countries including Japan, Germany, Italy and other allies which were there had recognized the provisional government of Azad Hind under the leadership of Netaji. But उसी के साथ हम देखते हैं कि a claim to the nation state was complete when you have the islands of Andaman and Nicobar which were handed over by the Japanese administration to the Azad Hind government. अब पॉलिटिकल थियोरी के हिसाब से 4 एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है स्टेट फॉर्मेशन के लिए, जिसमें जनसंख्या होनी चाहिए जो उस राज्य को स्वीकारे। So there was obviously an Indian population that accepted the Azad Hind government. It was not only the Indians who had migrated to Southeast Asia, but we see that even when the Indian National Army was campaigning in the regions of Manipur and Nagaland, तो वहां के locals ने बहुत बड़े प्रमाण पर support extend किया था INA के लिए. You also have a part of Manipuri territory that was occupied by the INA and a tricolour that was hoisted at Moirang in today's Manipur. Then there was a government which is a requirement, a second requirement of a state formation. Obviously, we had the Azad Hind government headed directly by Netaji himself. The third requirement which is there is sovereignty, independence, azadi. जो हम देखते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट थी तो क्लेम कर ही रही थी। और चौथी और महत्वपूर्ण चीज जो होनी चाहिए दैट इज टेरिटरी, कि आपके नाम की भूमि होनी चाहिए जिस पर यह सरकार स्थित है, जिस पर जनसंख्या रह रही है इत्यादि। So that also was there from the perspective of the Andaman and Nicobar Islands. Netaji had visited the Andaman and Nicobar Islands and renamed it as Shaheed and Swaraj Islands. And with this, the claim of a nation state for the Azad Hind was complete. It was on the same status that you have the later on Red Fort trials that were being fought under Bhulabhai Desai. Azad Hind सरकार ने हर एक चीज की जो एक रेगुलर गवर्नमेंट करती है. So it had its own symbols, it had its own flags, it had its own stamps, it had its own medals and awards which were granted to its civilians as well as soldiers. So जिस प्रकार से एक आजाद मुल्क में आजाद सरकार काम करती है, उसी प्रकार से आजाद हिंद सरकार जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काम कर रही थी. Now this is what sets the INA and Azad Hind government of Netaji apart. कि इससे पहले भी कोशिशें की गई थी, but this was the most successful attempt which was there, and this was indeed an armed struggle, एक सशस्त्र क्रांति भारत के आजादी के लिए. Now though the Indian National Army was not successful on the battlefields, इम्फाल और कोहिमा में हम जानते हैं कि आजाद हिंद फौज विजय प्राप्त नहीं कर सकी. You also have the defense of Burma, the defense of Singapore, which was put up by the Indian National Army, but again they could not succeed. Many of them were taken as prisoners of war by the British administration.
and many of them were eventually put up into what are called as the Red Fort trials. 3 अफसर खास करके इंडियन नेशनल आर्मी के हम देखते हैं कि रेड फोर्ट ट्रायल्स में खड़े किए गए थे. यह प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिलोन and Shahnawaz Khan, a Hindu, a Muslim, and a Sikh. Even at this time, we see that the British Empire was trying to play divide and rule policy. You have Prem Kumar Sehgal being approached by the Hindu political outfits, Shahnawaz Khan by the Muslim ones, and you also have Gurbakh Singh Dhillon being, approached by Sikh outfits, and the three of them stated that if the defense of these three officers or the other INA officers had to be made, it will be made by the Indian National Congress alone. It is that way that the INA Defense Committee came up under the leadership of Bhulabhai Desai, in which you have leaders from all the entire political spectrum, including Pandit Jawaharlal Nehru, including also Muhammad Ali Jinnah, who took part, trying to give legal counsel. ये रेड फोर्ट ट्रायल्स में हम जानते हैं कि इन तीनों अफसरों को कोर्ट मार्शल किया गया था फॉर वेजिंग द वॉर अगेंस्ट किंग एम्परर. और जैसे ही ये खबर फैली कि इन 3 अफसरों को imprisonment की नोटिस दी गई है, what you have is a naval mutiny which broke out. Now, many times it is asked that what is the greatest contribution which is there of Netaji Subhash Chandra Bose or his Azad Hind Fauj? Now, perhaps according to me, the greatest contribution which is there of Netaji Subhash Chandra Bose and his Azad Hind Fauj is that he spread the ideals of nationalism amongst the Indian soldiers, Indian officers who were serving in the British Indian Armed Forces. And that is what changed the course of the entire nation of India. फरवरी में हम जानते हैं कि रेड फोर्ट ट्रायल्स का नतीजे आए. इन रेड फोर्ट ट्रायल्स में भी हम देखते हैं कि आजाद हिंद फौज ने नेताजी की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के साथ बिल्कुल भी दगाबाजी ना करते हुए कौमी एकता का प्रतीक और कौमी एकता का संदेश जो है वो देशवासियों को दिया था. Seeing that grave injustice has been done, and again, the kind of treatment which was meted out to the Indian soldiers within the British Armed Forces, now both these factors came together to propel what has been called in Indian history as the Royal Indian Naval Mutiny of 1946. 18 फरवरी को हम देखते हैं कि रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी ये मुंबई से शुरू हुई. HMIS तलवार से हम देखते हैं कि ये इस म्यूटिनी की शुरुआत मानी गई है. Now, what is interesting to note is when the sailors and the soldiers of Navy came out and rebelled against the British naval administration, you have these sepoys, these rebellious, mutinous sepoys as they were called, being joined by the common people of Mumbai as well. Now, there was an alliance that was seen on the streets of Mumbai in February 1946. The alliance between the workers working in the industrial mills of Mumbai and the ordinary soldiers which were there of the Royal Indian Navy. और इन दोनों को मिलाकर ये नेवल म्यूटिनी जो है वो लोकप्रिय होने लगी. What is interesting to note is that it is after the naval mutiny that Clement Attlee addressed the British Parliament promising to dispatch the cabinet mission to India in order to negotiate with the Indian leaders a possible pathway to future independence. 18 फरवरी के दिन हम देखते हैं कि रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी की शुरुआत हुई थी. It was on the 19th of February that you have Clement Attlee addressing the House of Commons, stating that a cabinet mission will be formed to be dispatched to India, which eventually happened in March 1946. So, what has been generally stated so far is that the Quit India movement played an important role, or the Second World War played an important role, is undoubtedly there. It cannot be denied. But what immediately ensured the independence of India on the 15th of August 1947 is perhaps
the role of the Indian National Army, the role of Netaji Subhash Chandra Bose in inspiring this naval mutiny, which spread like wildfire not only in the city of Mumbai but throughout India. So, whether it was Vishakhapatnam, whether it was Calcutta, whether it was Karachi, you have it spreading throughout the British Indian region. The popularity of it, the spreading of the philosophy of nationalism, the inspiration of Netaji and his INA soldiers was so much that even the British conceded that it would be difficult to rule India. And this is not an opinion that is being shared by me alone. This is an opinion that has been formed even by the contemporary leaders over there. In one of his interviews given by Dr. B.R. Ambedkar to the BBC, you have him stating on record that according to Dr. Ambedkar, it was Netaji's Azad Hind Fauj which played an instrumental role in India achieving independence in 1947. Obviously, the weakening of the British Empire after the Second World War had a role to play. The strengthening of the movement under Gandhi also had a role to play, but the most important role was that of the Azad Hind Fauj of Netaji. Now, this was not only Dr. Ambedkar stating so, you also have the contemporary opinions which were there speaking about the same thing. So, for example, Sir Norman Smith, the director of Intelligence Bureau, in November 1945, much before the mutiny had started, states, and I quote, "The situation in respect of the Indian National Army is one which warrants disquiet." He also goes on to state and says that there has been a rise of sympathy which is there, not only amongst the Indian public interest, but also in the security agencies, which he says will be a threat to the security of the Indian army. And we cannot ignore this growing threat. You also have Lieutenant General S.K. Sinha, who became a Lieutenant General later, and he was one of the Indian officers who was there in the Directorate of Military Operations, also taking care of the intelligence department, stating that there was considerable sympathy which was there, a considerable sympathy for the Indian National Army within the British Indian Army. And there were genuine fears that were emerging कि शायद 1857 में जिस प्रकार से विद्रोह हुआ था, 1857 में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सशस्त्र क्रांति ये खड़ी रही थी, उसी प्रकार की घटना शायद एक बार फिर हिंदुस्तान में हो सकती है. So what you do have is that there were genuine fears which were there amongst the intelligence officers working for the British Empire, advising the British Empire and advising the British government, stating that there is a credible threat of a major mutiny breaking out from the army. And in case that happens, then it would be extremely difficult to control. ये किस प्रकार से हुआ? इसका एक ही जवाब है. It is the role of Netaji Subhash Chandra Bose and the Azad Hind Fauj. So the greatest contribution which has been there of Netaji has been inspiring the Indian soldiers to think about the Indian nation. अंग्रेजी हुकूमत का नमक भले वो खा रहे हो, भले वो सैलरीज पर हो, the king emperor meant nothing to them. Their ultimate loyalty should lie to their motherland, to India, is the message that the Azad Hind Fauj had spread. Now, this is the greatest contribution, perhaps, of Netaji and his INA. Now, the question which comes to, and the important aspect that we are discussing today, is the legacy. What is this undying legacy which is there of Netaji Subhash Chandra Bose in the shaping of Indian history? Now, one thing which we see is a pragmatic philosophy. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करियर को देखते हुए हमें पता चलता है that yes, he was greatly inspired by lofty idealistic goals, but at the same time he was also a realist. इसलिए उनकी विचारधारा में हमको आदर्शवाद के साथ साथ वास्तविकवाद भी उतने ही प्रमाण में दिखाई देता है. It was a pragmatic philosophy.
शुरुआत में हम जानते हैं कि उनका गहरा विश्वास था, उनका दृढ़ निश्चय था कि अहिंसा के मार्ग से ही आजादी मिलेगी. But eventually you do have him realizing that this alone cannot be a path, that there needs to be an armed struggle for India's independence as well. And that is exactly what he tries to create by leading the Indian National Army in the liberation of India. Now, another important contribution and important legacy which we have to understand from Netaji is that within his philosophy, you have different philosophies that had found its foundations. इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो बहुत बार हम देखते हैं कि आज के राजनीतिक विचारधारा के अलग अलग तबकों के लोग इजीली अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि नेताजी के विचारधारा में हम जानते हैं कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा ये बहुत ही गहरे जड़े बनाए हुए थी. उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि भारतीय अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिज्म जो है, उसका भी तो गहरा प्रभाव था. We know that he had studied the works of Swami Vivekanand and Ramakrishna Paramhans and was greatly inspired by their teachings as well. But at the same time, he was also inspired by the methods and the ideas which were laid down by Karl Marx and the Marxist philosophy. He knew that Marxism is important in the reorganization of the new social system. But the important contribution is he did not believe in a godless communism or godless socialism. In his philosophy, we see the coexistence which was there of spiritualism and socialism, that both can coexist. ये एक महत्वपूर्ण योगदान था. बहुत बार हम बात करते हैं कि आजाद भारत में 5 वार्षिक योजनाएं शुरू हुई, but often we tend to forget that नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की थी. Inspired by the Soviet model of planning, by the socialist system, you have the National Planning Committee that was established when Subhash Chandra Bose was the Congress president in 1938. So एक तरह से अगर हम देखें तो प्लानिंग की शुरुआत जो है ये हम सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से देखते हैं, जिन्होंने इंप्लीमेंट किया. और एक महत्वपूर्ण योगदान जो था वो सांप्रदायिक एकता का था, कौमी एकता. That कुछ भी हो जाए, we need to stand as one. What makes the Indian civilization, what makes the Indian culture rich, what makes it different is that there has been a coexistence of multiple cultures staying together, influencing one another for hundreds and thousands of years. Hinduism, Islam, Sikhism, Christianity, Judaism, Zoroastrianism, Jainism, Buddhism have all coexisted and prospered and given rise to the Indian culture, which is a composite culture. तो कुछ भी हो, हमें ये कौमी एकता जो है वो बनाए रखनी है. Unity, faith and sacrifice. These were the 3 pillars on which he based his the Azad Hind Fauj. और इन्हीं 3 आधार स्तंभों पर हम देखते हैं कि आजाद हिंद फौज आखिर तक लड़ती रही, even during the court martial when Netaji was no longer there. Now the question that obviously emerges is, where did Netaji go? The common theory that has been taught for multiple years is the plane crash one, कि नेताजी का देहांत जो है, मृत्यु जो है वो प्लेन क्रैश में हुई थी अगस्त 1945 में. But as we know, there have been numerous questions that have been put recently. There has been again evidence to show that the plane crash theory does not stand true. जस्टिस मुखर्जी कमीशन जिसकी नियुक्ति भारतीय सरकार ने की थी, उन्होंने भी ये कहा कि नेताजी की मृत्यु ये प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, पर कैसे और कहां हुई इसके बारे में अंदाजा नहीं है. There have been numerous speculative theories about what happened to Netaji. Did he go into China and disappear? Was he there in the Soviet Union? Was he the Tashkent man? Was he Bhagwan, the Moni Baba, who returned back to India and eventually
took up the path of spiritualism and Agyatwas. Now, no one really knows unless and until the files are fully declassified. Perhaps that knowledge is not going to come. But one thing which is certain is that even though there may be questions as to how the death may have happened, one thing is certain, that it is his life which gives us an inspirational message. Instead of discussing about what may have happened or how he may have died, let us focus on what was the message that he gave to India and to Indians. What was his vision to create an India that will be inclusive? What was his vision to create an India in which everyone will prosper? An India where democracy shall breathe. An India where freedom shall be guaranteed. It is these ideas, it is this vision of Netaji Subhash Chandra Bose, it is this flame that Netaji had burned which needs to be kept alive. As Netaji himself had said, one individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself into 1,000 lives. So let us take that inspiration from Netaji Subhash Chandra Bose and try to create a new India, the India of Netaji's dreams. But वो निर्माण तब हो सकेगा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का, के योगदान का हम गहरे स्वरूप में अभ्यास करने की चेष्टा करेंगे। अभी हाल ही में बहुत सारे सिनेमाज, बहुत सारी मिनी सीरीजेस जो आई हैं, जो नेताजी के ऊपर या फिर आजाद हिंद फौज के योगदान पर बनी है, is an important step in that direction, in the sense that at least in the public space, you do have in the popular culture the contributions of Netaji and his INA which is coming forward. It is again a delight to the ears that yes, we will be seeing the statue of Netaji Subhash Chandra Bose inaugurated in Delhi. And it is also very welcoming gesture of the Indian Navy, जो 26 जनवरी की परेड जो होने वाली है 2 दिनों में, वहां पर म्यूटिनी का भी उल्लेख करने वाली है। सो जो प्रदर्शन होगा, जो टैब्लो होगा, उसमें नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946 का उल्लेख है, ऐसे अखबारों में आया है। So it's a wonderful gesture that these forgotten episodes which are there of Azad Hind Fauj, Netaji's philosophy, and along with that, the Royal Indian Naval Mutiny inspired directly by the teachings of Netaji Subhash Chandra Bose, जो वापस एक बार public discourse में आ रहे हैं. Unless and until that happens, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार को अमल में लाना मुश्किल होगा. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस प्रकार का भारत निर्माण करना चाहते थे, ये आपका और मेरा उत्तरदायित्व है कि हम उस प्रकार का समाज, उस प्रकार का देश निर्माण करने की कोशिश करें. अंत में आप सभी को धन्यवाद दूंगा फॉर अ पेशेंट लिसनिंग, एंड विद द परमिशन ऑफ दिया मुंबई, विजय जी एंड हर्षल जी, वी कैन ओपन इट अप फॉर Q&A. Thank you so much. Thank you, Dr. Gadgil, for that extremely illuminating and breathtaking, not only a discourse, but a great historical account of how the events unfolded, and a lot of events that people do not know about. For instance, the mutiny of 1946 that many of us may not know about. And during your discourse, you mentioned forgotten names like Rash Bihari Bose. You mentioned Bhulabhai Desai. Now we know that there is a road in Mumbai that's named Bhulabhai Desai Road, but not many of us would know that with great impassion, Bhulabhai Desai, in the last years of his life, argued those Lal Killa, those Red Fort trials. So these are our heroes, in addition to Netaji, that the generation of today needs to know about, and take from their ideals how do we take this great nation forward and we regain its lost glory. Now I have a lot of questions, and a lot of questions are around I mean the issue of what actually happened to Netaji. But as you rightly said,
more than what happened to Netaji, because there is Justice Manoj Mukherjee Commission's report that is there in public domain. A lot of documents have been classified, and people have done some great research works in India and abroad to address this issue. So we'll focus today, at least, on the legacy of Netaji, and and what can we learn from his life rather than what actually happened to him. That's, we leave it for some other day. So one question that I immediately see is that wanted to know more about military strategies and competencies of Netaji. How did it grow in him? What was the background? As you rightly spoke, initially he was inspired by Swami Vivekanand, Ramakrishna Paramhans, and he was, in fact, he cleared the ICS as well, and then he chose not to go. What actually molded the if I may call it, the military thinking in him, and the belief that maybe a more radical approach is needed to fight against the British, rather than a passive approach, which may have its own advantages, but Netaji at some point thought that maybe this is not the right way. So what could have propelled it? Right. Absolutely. Now, we all know the contributions of Vivekanand's philosophies which were there on the shaping of Netaji's ideology as well. Or, as you rightly said, him getting selected for the ICS, yet resigning from it, considering that if he served the British masters, he would not be doing justice to his own nation, because of which he jumped into the freedom struggle instead of joining the Indian civil services. Stating that Netaji believed in a military solution as perhaps an alternative solution, or perhaps as the most important solution for the cause of India's liberation, was not something which germinates during the Second World War. You do have a belief that there can be a revolutionary path, there needs to be a revolutionary and military path to India's liberation, which can be seen even in the 1920s. He believed that Indians need to take up physical training and military training. In 1928, Calcutta session as well, when he was given the responsibility of arranging for the welcome of the Congress president and the delegation, you do have him designing a military uniform for himself as the leader of the welcome group, and also the youth members of the Congress who were dressed in a military style uniform, and you have a military style parade which welcomed the Congress delegation to the Congress Pandal. So ये कहना कि मिलिट्री में इंटरेस्ट जो है वो बाद में ही सिर्फ आया, ये पूरी तरह से सही नहीं है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतिहास विषय के भी गहरे अभ्यासक थे. यूरोपियन हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी थी. Obviously he had read European history of 19th and 20th century has a lot of wars in it. But still, he was not trained as a military commander or as a combat leader. So इसीलिए हम देखते हैं कि he was very wise enough to understand this aspect of governance, and he had left the military strategies to his own officers. अब बहुत बार हो जाता है कि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं. एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो जानता है कि कहां पे सेंट्रलाइज करे और कहां पे डेलीगेट करे. तो मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो है वो पूरी तरह से जो आईएनए के ऑफिसर्स थे, जो ट्रेन्ड कमांडर्स थे, उनको हम देखते हैं कि डेलीगेट की गई थी. बट पूरी स्ट्रेटजीज जो है आजाद हिंद फौज की, ये सिर्फ आजाद हिंद फौज के सेनानियों ने या सेनापतियों ने ही नहीं बनाई थी. You also have the role of the Japanese which was there. So you have the strategies which were prepared by the Indian National Army officers, put forward to the Japanese, and eventually the Japanese took the final call. So that is how the strategic part came out. But Netaji was involved in the process. The plans would be submitted to him. There would be discussions which would take place. And as has been recorded by many of the INA officers, that even though Netaji was not a trained combat leader, he had great insights into how the combat needs to take place, what are the problems of logistic management and other things. तो ये सारी चीजें जो है वो नेताजी को अलग से सेट पार्ट करती है, बट आईएनए ऑफिसर्स की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है. एक चीज हम देखते हैं कि नेताजी मार्क्स से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, नेताजी विवेकानंद से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, और नेताजी उस वक्त जो प्रोमिनेंट थ्योरीज रही होंगी, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स पूरी दुनिया में रहा होगा,
उससे भी प्रभावित हुए होंगे। तो हम ये देखते हैं कि नेताजी का जो जो व्यक्तित्व था या जो जो राह उन्होंने चुनी, वो एक बहुत ही, एज यू राइटली मेंशन्ड इन ड्यूरिंग योर टॉक, दैट इट वाज अ मेजर्ड, मोर काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड अप्रोच rather than going extreme towards let's say any one particular stream. So ये हमें ये दर्शाता है कि नेताजी डिफरेंट विचारों के प्रति ओपन थे। मतलब उनका ऐसा नहीं कहना था कि केवल यही विचारधारा सही है या वो विचारधारा सही है। तो इस तरह का जो एक न्यूट्रल अप्रोच आता है व्यक्ति में, तो वो किस तरह से, पर्टिकुलरली इन 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 रिस्पेक्ट टू नेताजी's life, how can we inculcate that we are open to different ideas and yet we remain committed towards this great nation, even accepting different ideologies and various political thoughts that all of us may have, but it's ultimately the country that is that should be at the forefront. आपका क्या take है इस बारे में? Absolutely. If we understand the unfolding of the Indian culture and civilization from the ancient most times to the present times, तो हम देखते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का जो महासागर बना है, ये हम देखते हैं कि अलग अलग धाराओं को मिलाकर मिला है. There have been multiple intakes which have been there at a philosophical level, at a societal level, at a political, economic level, which have come in over the past 4,000, 5,000 years or so. So ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हर एक अच्छी चीज को हम स्वीकारते हैं और कुछ नया बनाने की उसमें से कोशिश करते हैं. Now this is exactly what even Swami Vivekananda or Ramakrishna Paramhans stood for. That what is good needs to be praised, needs to be adopted within it. But अगर हमारी ही व्यवस्था में कुछ चीजें बुरी हैं, तो उसको बुरा कहना भी उतना बुरा नहीं है. इतना ही नहीं, और मतलब आप कहते हैं कि एक साइड पे स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी, जैसे कहा गया कि नेताजी पर बहुत प्रभाव रखती थी, या मार्क्स या सोशलिज्म की फिलॉसफी रखती थी. नो इनफैक्ट इफ वी रीड स्वामी विवेकानंद वेरी केयरफुली, तो स्वामी विवेकानंद के फिलॉसफीज में भी हमको कई हद तक सोशलिस्ट फिलॉसफीज देखने मिलती है. There's also a book, comparing the philosophies of Swamiji with Karl Marx. Swami Vivekananda had also stated that I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven. So वो भी जानते थे कि भविष्य जो है वो हमारे आवाम का है. So he also have a very democratic zeal, a socialist zeal. So socialism की विचारधारा भी एक बहुत नई नहीं थी. हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में उसका प्रभाव था. Yes, but we need to balance all these elements around. We need to have respect for our own culture. There is nothing bad in accepting Western notions or notions of any other culture or another society. But at the same time, we should not forget the Indian cultural values too. और उसका synthesis कर हमको आगे चलना है. Yes. ये एक सीख हमारा समाज, हमारा इतिहास भी देता है, और उसी के साथ साथ नेताजी की विश्वास भी देता है. मैं 1938 पे आना चाहूँगा. 1938 ही शायद वो साल था जब कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई नेताजी के बीच में और महात्मा गांधी के बीच. लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जब वो पूरी तरह कांग्रेस से अलग भी हो गए, तो उन्होंने एक पत्र लिखा जवाहरलाल नेहरू को, जब शायद गांधी जी एक बार फिर से फास्ट कर रहे थे. तो उन्होंने चिंता जताई कि बापू का जो स्वास्थ्य है वो बहुत फिर से उन्होंने फास्ट किया है और इस वजह से उनका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ हो गया है फिर से. तो हम देखते हैं कि जहाँ पे उन्होंने एक अलग रास्ता चुन लिया अपने लिए, वहाँ पर भी जो एक म्यूचुअल सम्मान था महात्मा गांधी के प्रति, चाहे कांग्रेस के उनके दूसरे कलीग्स रहे हों, उनके प्रति डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो म्यूचुअल सम्मान की भावना हमेशा थी. तो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इससे क्या कुछ सीख सकते हैं कि चाहे रास्ते अलग अलग हों, लेकिन आपसी जो सद्भाव है या रिस्पेक्ट है एक महात्मा गांधी जैसे लीडर के लिए, वो तो मतलब हम रख ही सकते हैं अपना एक अलग विचारधारा रखते हुए भी. बिल्कुल. हम देखते हैं कि ये सम्मान जो आप कह रहे हैं, दिस वाज म्यूचुअल. सो जैसे नेताजी ने अपना क्या कह सके, मतलब जताया था विश्वास की, पूछते हुए कि हाउ इज द हेल्थ ऑफ गांधी जी विथ रिगार्ड टू द फास्ट. Similarly, we see, as was aptly stated in one of the questions, कि
जो नेहरू ब्रिगेड है या जो गांधी ब्रिगेड है, इसका निर्माण भी किया गया था. This also shows the utter respect which was there in Netaji for these fellow leaders, even though there were numerous political differences, even though सुभाष चंद्र बोस जी को त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 का था, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था. इसके बावजूद भी कि उनको कांग्रेस से निलंबित किया गया था, एंड ही हैड टू एस्टैब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इवेंचुअली मूव आउट ऑफ द वे. इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जब आजाद हिंद फौज ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स की शुरुआत की, इन वन ऑफ द स्पीचेस, वन ऑफ द ब्रॉडकास्ट, यू हैव नेताजी कॉलिंग महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन. सो यहां पर हम म्यूचुअल सम्मान देखते हैं. और उतना ही नहीं तो हम देखते हैं दिस वाज आल्सो रिफ्लेक्टेड बैक by Gandhi ji himself when Gandhi ji gave his blessings to Netaji and called him as the prince amongst the patriots. So this is the kind of mutual respect that we see, which was there amongst the political leaders, that despite their political differences, they knew that the contributions of these individuals is phenomenal and it has to be respected. ये शायद आप जैसे कह रहे हैं कि एक सीख है आज के युग में भी, कि विचार अलग हो सकते हैं, फिर भी सम्मान जो है हमें देना चाहिए हर एक व्यक्ति के योगदान का. अपने पर्सनल निजी जीवन में भी हम ये सीख जो है वो ले सकते हैं. बिल्कुल. एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आया है कि क्या कुछ हम कह सकते हैं कि नेताजी का विजन रहा होगा भारत के बारे में. अनफॉर्चुनेटली जो इवेंट हुए वो हुए, बट यदि आज नेताजी होते तो किस तरह का भारत वो देखते, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या भारत एज अ डेमोक्रेसी हो, किस तरह की डेमोक्रेसी वो देखना चाहते भारत में, और किस तरह की गवर्नेंस वो देखना चाहते हमारे देश में. आपको क्या लगता है कि उनका विजन कैसा रहा होगा कि मान लीजिए भारत आज़ाद हो गया और अंग्रेज चले गए, तो किस तरह का भारत उसके बाद उन्होंने सोचा होगा? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल है, इन द सेंस दैट नेताजी के ऊपर बहुत सारे प्रभावों में से एक प्रभाव जो था जिस पर ज्यादा बात नहीं की जाती वाज दैट ऑफ मुस्तफा केमाल पाशा. केमाल पाशा ये टर्की के नेता हुआ करते थे जी. आधुनिकीकरण जो है टर्की में सामाजिक तौर पर हो, राजनीतिक या आर्थिक तौर पर हो, ये उन्होंने लाया था. और उनका विश्वास था कि टर्की जो है ये एक सामंतवाद के युग से, जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, सो इट वाज इमर्जिंग फ्रॉम फ्यूडलिज्म, एंड इफ इट हैड टू गो इनटू मॉडर्न टाइम्स देयर इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस व्हिच शैल कम फ्रॉम द सोसाइटी. तो इसीलिए एक टेम्पररी पीरियड जो है वो डिक्टेटरशिप का जरूरी होगा, जिसमें हम देखते हैं कि रैडिकल रिफॉर्म्स लाए जाएंगे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेवल पर, और उसके बाद डेमोक्रेसी की नींव जो है वो रखी जा सकेगी. सो इस प्रकार से केमालिज्म के विश्वास थे. सो दिस इज एन इन्फ्लुएंस दैट वी सी ऑफ ऑन नेताजी एज वेल, कि नेताजी के लेख में एक में जगह पे मेंशन्ड है दैट ही वुड वांट अ टेम्पररी डिक्टेटरशिप, अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप टू इमर्ज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब ये वो क्यों कह रहे हैं? अब इसके लिए उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, उनकी निंदा की गई है कि कहीं ना कहीं पर शायद ये फैसिस्ट विचारधारा थी, हिटलर मुसोलिनी के साथ में रहने की वजह से शायद वो प्रभाव आ गया था मिलिट्री डिक्टेटरशिप का. पर ये पूरी तरह से सही नहीं है. They have not read Netaji perhaps properly. It is the influence of Kemalism. Now, Netaji was fully committed to the ideology of a democratic republic, but understood that in a country like India, जहाँ पे ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्नाइजेशन ये कोएग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर क्लीवेजेस सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, भले वो जेंडर के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, लैंग्वेज के आधार पर हो. So if we have to wield a powerful nation in the future, then a temporary period of dictatorship might be necessary to tide over it. 1940 का दशक वापस हम जानते हैं कि सांप्रदायिक झगड़ों के लिए मशहूर था. This is also the time period that India unfortunately got partitioned. So he was trying to say that a military dictatorship perhaps can solve these type of issues, and after say about 10 years or 15 years after ये time period चला जाता है, India can have a stable functioning democracy in the future. But in the question as was also asked, socialism का विचार जरूर था. So I don't foresee कि एक अलग आर्थिक व्यवस्था आती. So it would have been the same mixed economy model with a dominant role played by the public sector enterprises जो
भारत में आजादी के पश्चात है, तो उसी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था जो है आती। राजनीतिक व्यवस्था ऑब्वियसली थोड़ी अलग होती, कंसिडरिंग नेताजी's views on temporary dictatorship before moving to a democratic institution. A full-fledged democracy. Yes. Dr. Gadgil, we could go on and on, but unfortunately, जो हमारा समय है आज वो सीमित है, and we've come to a close of this fantastic session. And it was pleasure interacting with you and hearing your detailed views on Netaji's his life and times and what he stood for, and क्या कुछ उनके विचार थे और क्या कुछ हम उनसे सीख सकते हैं. बहुत ही मैं कहूँगा कि एक हमारा अब तक का सबसे अच्छे सेशंस में से ये रहा होगा, और उसका कारण ये है कि हम कुछ प्रैक्टिकली देश के लिए करने के लिए कुछ सीख लेंगे आज के सेशन से. So I thank you so much, Dr. Gadgil, for taking out time and coming on Gyan Sabha's platform. And I would also take this opportunity to welcome you to Shanti Kunj, Haridwar, where the headquarter of Diya is situated, and which is celebrating its 50th anniversary this year. So please visit Shanti Kunj, which was founded by Pandit Shriram Sharma Acharya ji, who himself was a freedom fighter and who shed his physical self in the year 1990. But he devoted his a substantial time of his life towards the freedom of this country. And it would be great if you could visit Shanti Kunj as well as the University Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, which is founded essentially on the principles of ancient Indian wisdom with a confluence of modern science. So how can, as you rightly said, ours is a society that needs a balance of both. So that is what exactly the university is doing under the leadership of Dr. Pranav Pandyaji, the Chancellor and head of All World Gayatri Parivar. So please do take time out of your busy schedule once the pandemic subsides and do visit Shanti Kunj. It's a humble request from all of us here. Thank you, and best wishes to Divine India Youth Association and Shanti Kunj on occasion of 50th anniversary. थैंक यू सो मच. और मैं हमारे सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अगले सप्ताह का जो ज्ञान सभा का संस्करण है, आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बात करी, और अगले रविवार को हम बात करेंगे द रेलेवेंस ऑफ महात्मा गांधी इन रेफरेंस टू हिज व्यूज़ ऑन धर्म एंड वे ऑफ लाइफ. एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हमारे साथ होंगी डॉक्टर शशि तिवारी जी और इस विषय पे बात करने के लिए. तो अगले सप्ताह भी प्लीज़ हमसे ज़रूर जुड़िए, एंड हम इसी तरह से आपके लिए ज्ञान सभा के एपिसोड्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे कि हम ऐसे व्यक्तित्वों के विचारों से साझा हों जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, और एक बहुत ही बहुआयामी पर्सपेक्टिव से, जैसे आज डॉक्टर गडगिल ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, पूरा एक स्पेक्ट्रम जहाँ पे कोई एक पक्षीय बात नहीं है, बल्कि सारे पहलुओं को देखते हुए किस तरह से हम हमारे इन महान राष्ट्र के जो लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया, कैसे उनसे सीख लें, यही हमारा एक बहुत ही प्रोमिनेंट मकसद है. तो सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम, और अवश्य जुड़ें हमसे अगले रविवार को. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू.